had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth.
they are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT IFSC
and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards
energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Grameen. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Grameen continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care, and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector
and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. 83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision
of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral, and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience, and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts
Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment
we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh
crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honourable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honourable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade.
As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first started. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development, and performance, effective delivery, and Jan Kalyan has given the government trust, confidence, and blessings of the people to realize whatever it takes, the goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication, and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji. So, with your permission,
I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बजट, अंतरिम बजट पेश कर दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने, और बड़ी खबर उसमें यह कि इनकम टैक्स रेट्स में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है। कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि इनकम टैक्स रेट में मैं अंतरिम बजट के परंपरा के अनुसार कोई भी बदलाव प्रस्तावित नहीं कर रही हूं। तो आयकर में कोई बदलाव नहीं है, यानी अगर कोई राहत की उम्मीद की जा रही थी तो ऐसी कोई राहत की घोषणा नहीं है। नई टैक्स रेजिम में 7 लाख तक की आय वालों पर जो टैक्स नहीं लगता है, वही उन्होंने एक बार फिर रेखांकित किया कि जो 7 लाख जो रिबेट मिलती है, 5 लाख के ऊपर वालों को जो रिबेट मिलती है, उसी हिसाब से वो अभी भी जारी रहेगी। पिछले साल जिस तरह से टैक्स था वही टैक्स दरें इस साल भी लागू रहेंगी। कोई बदलाव नहीं है, ना इनकम टैक्स की दरों में, ना किसी और ऐसी चीज़ में जिससे इनकम टैक्स देने में, आयकर देने में किसी भी करदाता को कोई फ़ायदा या नुकसान हो। बड़ी बात यह कि कोई टैक्स चेंजेस नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट जो है वो 11.1% बढ़ा दिया गया है। ये एक बड़ी खबर। और फिस्कल डेफिसिट जो घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, वो अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी का 5.1% रहेगा। यानी सरकार जो है वो बजट का जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट सेट था 2025-26 के लिए 4.5% का, उसी तरफ बढ़ रही है। और वो इस साल घटाकर 5.1% रखने का अनुमान है, वो टारगेट है, ताकि 25-26 तक जाकर वो 4.5% पर आ जाए। 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है अभी भी नई टैक्स रेजिम में। रिबेट के साथ 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, वही जारी रहेगा। अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई इस बार राहत नहीं दी गई है। इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स की दरों में कोई भी बदलाव नहीं है। जीएसटी देनदारों का टैक्स बेस दुगना हुआ, उन्होंने बताया, और भी सारी बातें बताई कि किस तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर है, चल रही है। लेकिन इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। हमारे साथ अश्विनी जी मौजूद हैं, टैक्स एक्सपर्ट। अश्विनी जी, तो पहली आपकी प्रतिक्रिया, कोई बदलाव नहीं है टैक्स दरों में? कोई बदलाव नहीं है, जितना हमने सुना। वो टैक्स प्रोसेसिंग में उन्होंने कहा कि वो जो पीरियड है वो कम कर देंगे 93 दिनों का, और वो सब। नहीं, वो तो ऑलरेडी प्रोसीजरल चेंजेस हैं, हो ही रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट्स काफ़ी हैं, उस पर चली रही है गाड़ी पटरी पर जो कुछ छोटी छोटी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, कि कुछ थोड़ा सा हो सकता है 10% का और रिलीफ मिल जाए, 10 लाख तक हो जाए या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाए, वो कुछ भी नहीं है। तो वो अभी कुछ भी नहीं है। फिस्कल डेफिसिट 5.1% का टारगेट रखा गया जीडीपी का। आलोक जी। हाँ बिल्कुल, इसमें ये फिस्कल डेफिसिट को से उम्मीद, आशंका ये थी कि अब की बार जो है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, लेकिन ये 5.8% पे कंटेन कर लिया गया, और अगली बार और एम्बिशियस है 5.1% का। तो दरअसल देखना होगा जब फाइनल आंकड़े आएंगे कि जो सरकार के तमाम प्रोग्राम्स थे, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह के, वो हाउसिंग को लेकर है कि जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, चॉल्स में रहते हैं, यानी कि ये बात हो रही है जो शहरी लोग हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, उनके लिए एक स्कीम लाने की तरफ संकेत दिया गया। हाँ डेफिनेटली वो भी, और उसमें एक महत्वपूर्ण स्कीम और है कि वो जो छत पर अपने आप सोलर एनर्जी बनाई और मुफ्त की बिजली, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा है। वो कैसे
इम्प्लीमेंट, जैसे दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी उसी तरीके की वो देखते हैं कैसे। दिल्ली में तो चूंकि उस तरह के छतें नहीं है, लेकिन दिल्ली के बाहर जो सिस्टम है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो अपने आप में बहुत बहुत महत्वाकांक्षी। जी हाँ, ये इस पे बात करेंगे, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन टैक्स पर जो उम्मीद थी वैसा नहीं है। क्या कहा टैक्स पर वित्त मंत्री ने, वो एक बार फिर सुन लीजिए। I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. रिफंड फास्ट होने लग गए हैं। ये तो सिर्फ उपलब्धि बता रही थी, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई घोषणा की जा रही थी कि अब ये 10 ही दिन में होगा। पूरी जो टैक्स रिलेटेड स्पीच थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अभी तक की उपलब्धियां गिनाई गई हैं कि 2014 के कंपैरिजन में अब तक हम कहां तक पहुंच गए हैं। अभी आगे कहां जाना है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि 2013-14 के वित्त वर्ष में 2,20,000 तक जो कमाते थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब जो स्थिति यह है कि 7 लाख रुपए तक जो 7 लाख जो कमाते हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। की रिबेट अगर हम मिला लें, हाँ, रिबेट मिलाकर है वो 7 लाख रुपए तक पर। हाँ, कई लोगों को लगा कि शायद 7 लाख तक एग्जेम्पशन हो गई, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पिछले साल से ही 7 लाख है, ऐसा नहीं है कि 3 लाख को बढ़ा के 7 लाख किया गया। हम वो जो रिबेट है उसको मिलाकर अगर देखेंगे तो 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 7 लाख से ऊपर जाएंगे तो फिर टैक्स लगना पूरा शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वो अभी तक यही उपलब्धि गिनाई गई है कि जितना किया गया है अभी फिलहाल काफी है, अभी और कोई गुंजाइश नहीं है। अगले बजट में बात करेंगे, मतलब जो जुलाई में आएगा, उस पर उम्मीद रखें। ये क्या है, 10 साल पुराना 10,000 रुपए का तक का टैक्स का अभी पूरा जब प्रिंट आएगा तो समझ में आएगा। पर जितना समझ में आया कि वो डिमांड जो डिस्प्यूटेड है, जिसपे कुछ अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, तो उसको माफ करना चाहते हैं कि उस डिमांड को हम खत्म कर देंगे। मतलब अगर कोई बकाया आप पे लागू किया गया कि भाई 10,000 रुपए से कम अगर वो बकाया 10,000 से कम, लेकिन उसमें बड़े सारे इफ्स एंड बट्स होंगे। उस पर प्रतिक्रिया करने से पहले मुझे लगता है कि हमें वो प्रिंट जो आएगा उसमें पढ़ लेना चाहिए कि कौन कौन लोग क्वालिफाई करेंगे, किस किस तरह की टैक्स डिमांड उसमें क्वालिफाई करेगी। लेकिन अच्छा कदम मैं इसलिए कहूंगा कि चलिए पास लिटिगेशन को खत्म करने का एक प्रयास है और अच्छी बात है। ये उनके लिए जिनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ बोला हुआ है कि आपका पुराना बकाया है, कोई पुरानी डिमांड है, पेंडिंग डिमांड है जी, कि आपका बकाया बनता है, आप दीजिए जी। तो अगर वो 10,000 रुपए से कम का बकाया है तो वो उसको माफ कर देंगे, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं एक तरह से। हाँ, कि चलिए छोड़िए, वेव कर रहे हैं। हाँ। जैसे लोन वेवर्स होते हैं तो इस तरह से जो सरकार की तरफ ड्यूज है उसको वेव कर रहे हैं। ऐसा अभी स्पीच सुन के लगा। जो प्रिंट आएगा तो मुझे लगता है कि प्रिंट पढ़ लेना चाहिए, उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या इफ्स एंड बट्स हैं, उसको पढ़ के हम इस पे ज्यादा अच्छी प्रकृति के। और ये टैक्स प्रोसेसिंग की अवधि 93 दिन हुआ करती थी, अब 10 दिन में। यानी कि ये जो रिफंड की बात, जो रिफंड है उसमें या कोई और प्रोसेसिंग होकर आनी है तो क्या आपने रिटर्न फाइल की, उसके बाद जो रिफंड आता है वो पहले 93 दिन बाद। प्रोसीजरल एफिशिएंसी है कि डिपार्टमेंट बहुत एफिशिएंट और अच्छे टाइम, ये 10 साल में फास्ट काम कर रहा है। 10 साल में उपलब्धि हुई है। हाँ, तो और दूसरी बात बताइए सबसे बड़ी कि फेसलेस जो हुई है, कि पहले आपको जाना पड़ता था, रिटर्न भरनी है, आपको इंट्रैक्शन करना है, असेसमेंट हो रही है आपकी, तो अब कहीं नहीं जाना, आपको आप रिटर्न भरिए, सारा काम ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू होगा, जो ऑर्डर आने सिस्टम के थ्रू होंगे। फर्स्ट अपील तक सारा फेसलेस हो चुका है, तो वो उपलब्धि उन्होंने याद दिलाई कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये इसको कैसे देखते हैं आप आलोक जी? देखिए, मैं तो अगर पूरा भाषण आप गौर से देखें तो मुझे दरअसल ये चुनावी भाषण लगता है कि हमने ये कर लिया, और वो भी 10 साल का। हाँ, 10 साल का। और उसमें अब ये चुनावी भाषण इस सेंस में कि रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, उसकी फाइनेंसिंग, उसके बहुत स्पेसिफिकेशंस हमारे पास नहीं है। एक महत्वपूर्ण कदम डेफिनेटली जो इस बजट के बाहर अंदर हो सकता था कि ये जो आशा आंगनवाड़ी बहनों को आयुष्मान भारत से जोड़ दिया गया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और 1 लाख करोड़ का फंड बनाया गया है जिसमें स्टार्टअप्स को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे बहुत लंबे टाइम तक के लिए लोन दिया जाएगा। डेफिनेटली वो बड़ी बात है। और एक इसमें डायमेंशन दिखाई पड़ता है कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी एंगल है कि लक्षद्वीप में भी टूरिज्म प्रमोट करने का एक अलग तरीके से वो प्रयास रहेगा, जिस पर हाल के दिनों में हमने मार्केट देखी। टूरिज्म पे एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। रेलवे को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा और है कि 40,000 बोगीज को कन्वर्ट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा वंदे भारत के स्टैंडर्ड पे। तो डेफिनेटली ये सारी योजनाएं, लेकिन जैसा मैंने आपसे ये निवेदन किया कि ज़्यादा करके हमको दिखाई पड़ता है कि 10 साल में हमने ये किया और ये करने वाले हैं।
तो जो एक स्पेसिफिक्स बजट में हम डिस्कस करते थे कि ये टैक्स प्रपोजल और वो टैक्स प्रपोजल है, तो बहुत साफ पूरा बजट 2 लाइन में क्रक्स में मैम ने बताया कि हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं टैक्स के स्ट्रक्चर में, विच प्रिसाइजली मीन्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज जो टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं वो उनकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक पोजीशन जो आज से 1 साल पहले 1 फरवरी 2023 को थी, ऑलमोस्ट वही 1 फरवरी 2024 को है। भले इसमें इन्फ्लेशन रेट 6% बढ़कर उनकी परचेजिंग पावर को 6% कम कर गया हो, लेकिन टैक्स का लेवल, लेकिन इसमें अगर आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 6% थी, महंगाई 6% बढ़ी, तो उनकी परचेजिंग पावर 6% कम हो गई, लेकिन टैक्स वही का वही रहा, लेकिन उनकी आमदनी बढ़ी होगी, ये भी तो हो सकता है ना? नहीं, डेफिनेटली उसमें अगर हम 6% इन्फ्लेशन रेट बढ़ी, आप एंकर हैं, मैं प्रोफेसर हूँ या एक्सपर्ट हैं, इनकी 10-12% बढ़ सकती है, लेकिन इकोनॉमी में बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा भी है जिसकी 6% नहीं बढ़ती है, उनकी पिछले बार जो इनकम थी वही रहने वाली है, तो 6% से वो पीछे चले जाते हैं। एक उम्मीद तो हम बनाए रखेंगे क्योंकि अभी बजट आना है। हाँ, इसलिए सारी कहानी टैक्स रेट्स तो अभी डिसाइड होंगे, सारी कहानी तो फिलहाल उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। इसमें सर मैं इसको यूं भी देखता हूं कि जब आपको ये बजट आपने पेश कर दिया इनकम टैक्स का, तो ये नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों को भी जरा ध्यान रखें कि भाई ये बजट तो अभी आना है, ये जो टैक्स रेट है, इंटरिम बजट है ये तो, हाँ, और ये जो टैक्स रेट है इस पे तो इस साल की रिटर्न फाइल करनी है, पिछले साल वाले अभी जो आएगा उस पे अगले साल की रिटर्न फाइल करनी है, वो तो जुलाई में पता चलेगा। मैं आपसे क्या करता हूं, भगवान ने चाहा तो जुलाई में हम फिर बैठेंगे बजट पे, लेकिन जो मेरा असेसमेंट है कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिडिल क्लास को जो मिलने वाली है वो जुलाई में भी नहीं मिलेंगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए तब तो वोट पड़ चुके होंगे। हाँ, नहीं, वोट पड़ चुके होंगे। दूसरी बात ये कि हम शायद डिस्कशन पहले भी कर रहे थे कि उन वजहों से मिडिल क्लास का वोट उनको मिलता नहीं है कि वो टैक्स पे डिपेंड करता हो, तो ना तो यहाँ और ना वहाँ, वो किन्हीं और वजहों से हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैं ये असेसमेंट मेरा ये है कि जो टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स छूट की उम्मीद हम लोग करते हैं वो जुलाई में भी साकार होने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ, जुलाई तक आप उम्मीद रख सकते हैं, हमें आशा रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ चेंजेस बहुत जरूरी हैं, जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड, मेडिकल क्लेम से रिलेटेड, हाउसिंग रिबेट से रिलेटेड, वो सब चेंजेस अब उम्मीद करेंगे जुलाई में होना चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने के साथ साथ टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग भी जरूरी है, चाहे हम मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखें। सरकार किसी का अनदेखा नहीं करेगी, ठीक है, उनकी अपनी इस टाइम मजबूरियां हैं, अभी इतने कम समय में वो निर्णय नहीं लिए जा सके, नहीं तो फिर जब सरकार आएगी तो हम पूछेंगे सर वेलकम गिफ्ट क्या दे रहे हैं, तो वो वेलकम गिफ्ट के रूप में मुझे लगता है, उम्मीद है कि यही सरकार अगर आती हैं तो वो सब टैक्स रेट्स में जो स्ट्रक्चरिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग है, रिलीफ है, वो हमें जुलाई में देखने को मिलेगा। मैं आशा बनाए रखना चाहूँगा। 2 बातें इसमें बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं कि जैसे अभी कल जो डेटा आया, जीएसटी का कलेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा, 1,70,000 करोड़ से ऊपर, और फिस्कल डेफिसिट लगातार कम होने की बात सरकार कर रही है, यानी कि 5.8% तो 23-24 के लिए हो गया, और 5.1% हम 5.8% है 23-24 का, और अगली बार 5.1% है, और ये गिरा के 4.5% ले जाने की बात। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सरकार आश्वस्त है कि हम ज्यादा कर का संग्रह कर लेंगे, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, और उसके मैं रोक रहा हूं, मनीष तिवारी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। Clearly demonstrate that over 18 lakh crores is the unfunded extent of the union budget for this year, and this number is only going to increase over the next year. If you leave that aside for a moment, the rest of the budget speech was mere grandstanding. It was like driving, looking into the rear view mirror rather than looking ahead. So therefore, the finance minister spent all her time in extolling her own track record, which obviously is questionable, and trying to run down what had happened 10 years back. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ये कहते हुए कि वित्त मंत्री का सारा जोर इस बात पर था कि 10 साल पहले कितनी खराब हालत थी, वहां से हम कहां से कहां लेकर आए हैं कश्ती को, अर्थव्यवस्था की, वही दिखाने में रह गई निर्मला सीतारामन। आगे कुछ नहीं है, ये तो कांग्रेस है और विपक्ष है उसका ये कहना। शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिशिर, क्या देखते हैं, क्योंकि मुख्य पॉइंट क्या देखते हैं इसमें? एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट बढ़ाया गया, वो है, टैक्स रेट्स में बदलाव नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या देखी जाए इस बजट में? देखिए, लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स की अगर बात करें, जो उनके छोटे छोटे जो है वो डिस्प्यूट थे फंसे हुए किसी ना किसी वजह से, जिसकी वजह से 10 साल से उनका रिफंड नहीं आ पा रहा था,
ऐसे लोगों के लिए जो है वो एक राहत की बात है कि उनका जो कुछ भी डिस्प्यूट था वो सब के सब राइट ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसे किताब से हटा दिया जाएगा। ये इससे फायदा उनको ये होगा कि 2014 तक जितने भी ऐसे कोई भी विवाद अटके हुए थे वो अब उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनका रिफंड जो है वो आ पाएगा। ये लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दे सकता है। दूसरा देखिए, अगर आप जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर 11,11,111 करोड़ बढ़ाने की बात कही गई है, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखिए, यानी कि 1 रुपया जब आप खर्च करते हैं तो इसका फायदा 3 रुपये का होता है। और ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि अब सरकार का सारा जोर जो है वो जो 2030 तक $60 ट्रिलियन की बात कही गई उसको कैसे अचीव किया जाए। इसके अलावा राज्यों को जो 50 साल के लिए जो ब्याज मुक्त कर्ज मिलता है वो ज़्यादा रकम प्रावधान किया जाना वो एक अच्छी पहल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाना भी लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि अगर कर की दरों में कोई बदलाव हो या किसी और व्यवस्था में बदलाव हो वो कहीं ना कहीं एक जिसे कहा जाए कि एक परेशानी भी करता है, क्योंकि पूर्ण बजट में क्या होगा हमें पता नहीं है। तो पूर्ण बजट मैं रोक रहा हूं आपको शिशिर। शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। About a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on, but when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. रोजगार पर कोई बात नहीं हुई, चाहे महिलाओं के चाहे युवाओं के, ये शशि थरूर का आरोप। अच्छा, एक और अहम बिंदु जिस पर आलोक जी हम बात कर रहे थे, ये जो कहा गया है अफोर्डेबल होम्स, घर खरीदने के लिए जो लोग किराए पर रहते हैं या झुग्गियों में रहते हैं, ये चौल में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, उनके लिए कोई एक स्कीम आएगी। उस स्कीम के बारे में भी ज़्यादा डिटेल नहीं है। वो एक स्कीम आएगी जो उनको मदद करेगी अपना घर खरीदने या बनाने पर। यानी वो आवास योजना उस तरह से नहीं होगी कि सरकार बना के देगी। सरकार के बनाए हुए अफोर्डेबल होम्स की बात नहीं है, ये एक ऐसी स्कीम की बात है जिसके ज़रिए उस वर्ग के लोग जिनके पास अपना घर नहीं है और जो निम्न आय वर्ग के हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी बातों से, क्योंकि उन्होंने कहा कि रेंटेड हाउसेस, स्लम्स और चॉल्स, उनके लिए एक स्कीम के जरिए उनको पैसा उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वो अपना घर खरीद सकें। ये स्कीम देखनी होगी कि क्या है। देखिए, कंस्ट्रक्शन में कुछ भी पैसा डलता है वो अल्टीमेटली उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। वो लोहे से लेके और सीमेंट से लेके और तमाम चीज़ें जाती हैं। अभी जैसे जिस वर्ग की बात हो रही है कि वो चौल में है या अनऑथराइज्ड में, दरअसल वहाँ पे फाइनेंसिंग बहुत मुश्किल होती है। लोन ना बैंक देता ना फाइनेंस कंपनी देती। अब वो देखना पड़ेगा मॉडलिटीज किस तरह की आती है, किस श्रेणी में वो दिया जाने वाला है। क्योंकि होम लोन वाली चीज जो थी वो तो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए ही ज्यादा फायदेमंद रही। नहीं, वो जो फाइनेंस जो मिलता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वो बड़ा चेक कर लेती है कि इसके सारे क्लैरिटी है, ये पूरा लीगल पूरा सेटअप इसका है। लेकिन अगर वो चौल में या अनऑथराइज सेक्टर में तो किस तरह से उसकी मॉडलिटीज देखनी पड़ेंगी कि वो अल्टीमेटली स्कीम तो बहुत शानदार ऑन पेपर दिखाई पड़ी, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी किस किस की बनेगी वो देखना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव इसलिए कि कंस्ट्रक्शन में कुछ भी आप करें उसके इम्पैक्ट फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट में जाते हैं। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए भी, और जो लोग उसको यूज करेंगे चुनी जी, या जो लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत अहम बात हो जाती है अगर अपना घर होता है तो। मेरे ख्याल से अब जिस तरह से सारा सिस्टम दुरुस्त कर रहे हैं, आधार कार्ड है, केवाईसी सिस्टम है, पैन है, रिटर्न फाइलिंग शुरू हो गई है, तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स बनाएंगे कि ये एलिजिबल है लोन के लिए। और मुझे लगता है लो EMI, वेरी लो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पे इस तरह के लोन, हाँ, मतलब वो स्कीम देखनी पड़ेगी। शिशिर, ये मोरेटोरियम देंगे उसमें कि कंस्ट्रक्शन जब तक चल रही है तब तक आपको रिपे नहीं करना है। जी जी, मुझे लगता है इस तरह के इंसेंटिव होंगे। जी जी शिशिर, ये स्कीम देखनी पड़ेगी जिसका जिक्र किया है कि जो लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, चॉल्स में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, वो अपना घर कैसे खरीदें या अपना घर कैसे बनाएं, उसके लिए एक स्कीम आएगी। ये एक अहम घोषणा हो सकती है इस बजट की। बिल्कुल, अगर आप इंटरेस्ट सबवेंशन जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और जिस तरीके से बातचीत की गई है, उससे लगता है कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऐसे हाउसिंग के लिए होगा कि आप एक निश्चित ब्याज दर से ज़्यादा हो जाए तो आपको एक इंटरेस्ट पे जो है वो सब्सिडी भी दी जाएगी।
इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो अभी हमारे पहले के वक्ता कह रहे थे कि चौल में या अनऑथराइज कॉलोनी की बात है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और न केवल दिल्ली और मुंबई या जैसे बड़े शहरों की बात है बल्कि तमाम छोटे शहरों में भी ये मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि आवास का बनना, घर का बनना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का बढ़ना लगभग 400 तरह की आर्थिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद करता है और उद्योग उसमें शामिल हैं ही। तो ये एक तरीके से एक विन विन कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए भी एक उसका फायदा है और उद्योग जगत के लिए भी उसका फायदा हो सकता है। जी हाँ, तो ये इसलिए अब लेकिन किसी भी तरह की स्कीम हो वो देखना पड़ेगा किस तरह से है। लेकिन इंटरेस्ट शिशिर आप किस आधार पर कह रहे हैं ये इंटरेस्ट सबवेंशन वाला हो सकता है? जैसे पहले जो 2 स्कीमें की गई थी हाउसिंग की, चाहे अगर आप ग्रामीण देखें या शहरी देखें, उसमें कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की गई थी। तो ये चर्चा काफी समय से चल रही थी कि मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में जो लोग हैं उनको हम कैसे हाउसिंग के लिए और ज्यादा प्रमोट कर सके, इसीलिए वहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन की बात हम कह रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है शाम को 4 बजे जब ब्रीफिंग होगी उसमें ये स्थिति और साफ हो पाए। हाँ, कि ये अपना घर बनाना या अपना घर खरीदना ऐसे वर्ग के लिए कैसे मुमकिन होगा, वो किस तरह की स्कीम होगी, इसकी डिटेल्स देखनी होंगी। इसके अलावा शिशिर, ये सोलर की बात जो हुई है, सोलर एनर्जी को यूज करने की, उसको लेकर क्या समझा जाए? अगर आप याद करिए 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने वहां पर अयोध्या से लौटने के बाद ही 1 करोड़ घरों के छत पर जिसको कहा जाए सोलर रूफटॉप लगाने की बात कही थी और आज इसका और एक विस्तार किया गया है कि किस तरीके से एक परिवार को आपको मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनते हैं। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले 1 दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है, यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो हाँ शिशिर, हम उसकी बात कर रहे थे रूफटॉप सोलर की। जी, इसमें देखिए जो 300 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त देने की बात कही गई है और इसके अलावा जो आपके पास अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता है वो बिजली कंपनियों को भी बेच सकते हैं। तो परिवार के लिए, एक परिवार जिसके छत पर ये सोलर रूफटॉप लगाया जाता है, उससे उनका किस तरीके से बेनिफिट होगा, लगभग 15-20 हज़ार रुपये के बचत की बात कही गई है। और इसका सबसे बड़ा ये है कि जो हम लोग क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, न्यू एंड रिन्यूअल की तरफ बढ़ रहे हैं, उस दिशा में ये एक अहम कदम है। जी हाँ, और देश को क्लाइमेट चेंज को लेकर भी जो सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है उसमें भी इसकी मदद आएगी, क्योंकि अगर लोगों के घरों की छतों से अगर बिजली बनने लग जाएगी, मतलब ये स्कीम उस तरह से लग रही है, पूरी डिटेल तो देखनी होगी कि भाई आपके पास अगर छत है तो आप सोलर पैनल के जरिए अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए बिजली आप यूज करेंगे और एक्स्ट्रा होगी तो वो आप ग्रिड को दे सकेंगे, कुछ इस तरह की स्कीम। देखिए, नॉन मेट्रो शहरों में, जिसमें दिल्ली में तो चूंकि किसी के पास अपनी छत नहीं है, मतलब ज्यादातर के पास 22 फ्लोर में तो कहाँ छत है, लेकिन जो दिल्ली के बाहर के शहरों में तो आपको ये स्कीम कमोबेश, जैसे नागपुर, इंदौर में आपको दिखाई पड़ जाएगी कि कुछ लोन लेके, बहुत सस्ते रेट पे लोन लेके अपनी लोग छतों पे करवा रहे हैं। दिक्कत सारी है कि अभी वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ता, एक टाइम काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर वो पैनल सस्ता हो जाए तो ये स्कीम डेफिनेटली मतलब विन विन सबके लिए है, कंज्यूमर के लिए भी और सरकार के लिए भी। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अब हम जैसे डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, पर वो भी अंतिम विकल्प नहीं है, वो मंजिल नहीं है। तो
मतलब जो अब एनालिसिस निकल के आ रहे हैं कि सोलर एनर्जी ही हमारी जो है मंजिल बनने वाली है, वही फ्यूचर है। तो उस दिशा में छोटा सा प्रयास है, जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो मुझे लगता है काफी कुछ सोलर एनर्जी को हम लोग हार्नेस करेंगे। हाँ, लेकिन एक मोटी बात, जो बड़ी बात जो इसमें जो बात कही जा रही थी कि चुनावी साल है तो कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कुछ मिल सकता है, और टैक्स को लेकर खासतौर पे कहा जा रहा था, और उस पे हम बात करेंगे। राजनाथ सिंह को सुन लेते पहले। उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बहुत थैंक यू सर। तो जो चुनावी, और वो इसलिए भी था क्योंकि 2019 का जो अंतरिम बजट था उसमें कुछ कुछ चीजें जरूर थी, जो कुछ कुछ बदलाव थे जो किए गए थे, और कुछ रियायतें थी जो मिली थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। क्या शिशिर ये दर्शाता है, क्या ये नहीं दर्शाता कि सरकार इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है चुनावों को लेकर? बिल्कुल किशोर, आप वही वाक्य हम इस्तेमाल करने वाले थे कि ये सरकार के विश्वास को ही दर्शाता है कि अगर वो किसी भी तरह के निर्मला सीतारमण जी ने आज जो इंटरिम बजट पेश किया, ये फुल फ्लेज बजट नहीं है, इंटरिम बजट है, लेकिन इंटरिम बजट जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया तो बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है, और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं इस इंटरिम बजट के कारण ही, जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी, और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। बहुत थैंक यू सर। तो ये राजनाथ सिंह को भी सुना। आलोक जी, सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है कि ये अंतरिम बजट वाकई में अंतरिम ही था, ये अंतरिम बजट ही था, इसमें कुछ नहीं था वो वाली घोषणा जो उम्मीद की जा रही थी। देखिए, इसमें अगर आप बजट के डॉक्यूमेंट्स को और फाइन डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाता है कि 9 साल में पर कैपिटा इनकम 1.97 लाख डबल हो गई। मतलब ये फिगर है, ये बताया जाता है हमको कि 10 साल में हम 10 से 5th इकॉनमी की ओर आ गए, और 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। तो इंटरिम तो है, साथ में बड़ा ये इस तरीके से एक इवेंट का इस्तेमाल है कि भाई हमने सारी चीजें ये की। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और व्हाइट पेपर भी ना, व्हाइट पेपर कंपेयरिंग 2014-15 टू अभी वो जो व्हाइट पेपर आएगा वो भी ये इसी को कंपेयर कर रहा है कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। डेफिनेटली एक तरह से परफॉर्मेंस रिपोर्ट और रिपोर्ट कार्ड की हमारी। देखिए, आंकड़ों में स्टैट्स में हम ये करते हैं, सर को भी इसका अंदाजा होगा कि जब जैसे हम 10 साल का फ्रेमवर्क लेके चले तो चीजें स्पेक्टाकुलरली डिफरेंट दिखाई पड़ती हैं। जैसे मेरी सैलरी 10 साल पहले आज के मुकाबले आधी रही होगी, अब 10 साल में डबल हो गई। तो 10 साल का फ्रेमवर्क दिखाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा इंप्रेसिव होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत स्मार्ट इसका यूज़ किया गया है। लेकिन अभी टैक्स से लेके तमाम चीज़ों पे बहुत ऐसा कंक्रीट हमारे पास नहीं जिस पे आप ये कह सकें कि आज के बाद, यानी इसके बाद, इस बजट के बाद इन लोगों की लाइफ में ये चेंजेस आने वाले हैं। पर्टिकुलरली मिडिल क्लास को लेकर तो वो तो जुलाई के बाद ही पता चलेगा। मिडिल क्लास को लेके तब भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जैसे हमारे एक मित्र ने बताया कि इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम ही आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो साफ दिख रहा है कि तो सुबह जो बात हो रही थी कि सरकार को कुछ करते दिखते रहना चाहिए, तो ये सरकार का जो स्टेटमेंट है वो कुछ और है कि नहीं, हम सही मायने में कर रहे हैं। हाँ। इसलिए हमें छोटी मोटी चीजें दिखाना नहीं है कुछ करने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को सुन, जो हम कर रहे हैं वो सॉलिड कर रहे हैं। हाँ। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी, सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है, उसको भारत की नौजवानों में
पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है, इनोवेशन एक जन आंदोलन की रूप ले रहा है और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। आपके मंत्रालय से दो सवाल है संबंधित सर कि एक जो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, युवाओं को स्किल्ड किया गया है और दूसरी तरफ 390 यूनिवर्सिटी खोले गए हैं पिछले 10 साल में, इसके बारे में थोड़ा जानना। देखिए, PM3 के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए IIT, नए IIM, ये सारे जो उल्लेख किया गया है ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1 करोड़ 40 लाख नई पीढ़ी के लोगों को स्किल, अपस्किल, रिस्किलिंग करने की बात कही गई है। ये आने वाले दिनों में और गति पकड़ेगी। इस बजट, जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है इस बजट में, जिस प्रकार की देखिए 3 नया, तो एक और चीज, एक और अहम बिंदु जिस पे हम आने वाले थे, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका जिक्र किया, वो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस, 1 लाख करोड़ का कॉर्पस R&D को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कोई भी कंपनी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो वो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस जो है उसकी घोषणा की गई है इसमें। ये एक बड़ा अहम कदम, आलोक जी। इसमें स्टार्टअप्स को बहुत कम रेट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, ऐसी घोषणा वित्त मंत्री ने की थी। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इश्यूज, खासतौर से छोटे स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत आसानी से नहीं मिलती। बड़े स्टार्टअप को तो ग्लोबल फाइनेंसिंग मिल जाती है, तो डेफिनेटली बड़ा इशू है। बस वही कि ग्राउंड पे किस तरह का उतरता है, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि बड़े बड़े नाम है उनको तो बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे IIT से आप करके आए, IIM से करके आए, बहुत इजीली मिल जाएगा, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आइडिया आपका शानदार है, तो उसको अगर छोटा स्टार्टअप के तौर पे कुछ मिलेगा। एक बात और भी है, अगर आप देखें तो अगर हम कहीं पीछे रह रहे हैं कॉम्पिटिटिव एज में, तो आज इसी वजह से रह रहे हैं कि हमारे पास R&D से रिलेटेड फैसिलिटीज नहीं है उतनी रॉबस्ट। तो अगर उसको प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटीज अच्छी हैं, स्किल अच्छे हैं, एंटरप्राइजिंग स्किल्स हैं। अगर R&D सेक्टर में हम विकास कर पाते हैं तो मुझे लगता है हम आने वाले टाइम में जो चाइना से विकल्प के रूप में भारत को देखा जा रहा है वो सपना पूरा हो सकेगा। या तो मुख्य बातों पे एक बार फिर मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। इस अंतरिम बजट की, अंतरिम ही रहा बजट। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ अंतरिम बजट में। पिछले अंतरिम में तो हो गया था, इस बार कोई नहीं।